Hi Hitesh, hi Vinay, hi happiest human. Happiest to human, I am also happy to see you. Such a nice name. क्या हालचाल गए सो मेरे को मोटा मोटा आज मैंने गेम खेलना खत्म किया तो मेरे को उसके बारे में बात करनी है. द गेम इज हाफ लाइफ एंड इट्स अ प्रिटी सॉलिड गेम विच आई फिनिश्ड प्लेइंग लाइक रिसेंटली. मैंने आज सुबह 7 बजे खत्म किया था. आई हैव बीन प्लेइंग अ लॉट ऑफ गेम्स रिसेंटली क्योंकि मेरे को अभी रिसेंटली पता चला है कि आप मैक पे भी स्टीम के थ्रू बहुत सारे गेम्स खेल सकते हो. सो आई जस्ट फिनिश द होल हाफ लाइफ सीरीज एंड आई हैव बीन आस्किंग माई सेल्फ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि आर गेम्स सुपीरियर फॉर्म देन मूवीज. तो हम एक बंदे के बारे में बात करेंगे. लाइक लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन थ्रू दैट. आई विल शेयर माय स्क्रीन क्विकली विद यू गाइस. वन सेक. ठीक है. सो दिस इज द गाय गेब न्यूएल. इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज. इस बंदे ने वैल्व कंपनी का ये फाउंडर है एंड लाइक मैं थोड़ा आज पढ़ भी रहा था इसके बारे में. वीडियो गेम्स और मूवीज विच इज अ बेटर मीडियम. सो यू ऑल्सो टेल मी आप लोगों को क्या लगता है. The game I finished playing was this Half-Life 2. It's a pretty solid game and जैसे मेरे को इसका एम्बियंस बहुत ज़्यादा पसंद आया बिकॉज आई थिंक कि इन अ लॉट ऑफ गेम्स द एम्बियन इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू हाफ लाइफ 2. और ये बहुत पहले आया था गेम. दिस इनिशियली रिलीज्ड ऑन 16 नवंबर 2004. सो मैंने इसका पार्ट 1 खेला हुआ था. लाइक मेरे को अभी भी याद है. लाइक इट इज आई मस्ट बी इन 6 और 7 स्टैंडर्ड. और मकर संक्रांति थी. मेरे सारे कजन्स छत पे पतंग उड़ा रहे थे एंड आई वाज द वन लाइक हु वाज डूइंग दिस. बट जैसे कमेंट्स में कुछ लोग कह रहे हैं कि मूवी इज अ सुपीरियर आर्ट फॉर्म. मेरे को भी यही लगता था बट अंटिल आई प्लेड अ फ्यू गुड गेम्स. और मैंने तो अभी भी इतने शानदार गेम्स नहीं खेले हैं. लाइक देर आर सो मेनी गेम्स आउट देयर लाइक विच आर ब्रेकिंग. जैसे अभी द लास्ट ऑफ अस 2 आया. सो जैसे आई शो यू अ फ्यू कमेंट्स. सो जैसे रेडिट पे चल रहा है कि there is no solid answer. It depends on the story. A story like The Last of Us, Undertale, or Portal will never work in a movie, but a story like Wolf of Wall Street, Antichrist, Inside Out, or whatever won't work in a video game. Summarizing, they aren't really comparable. Depends on what you're looking for at the moment. You are not really going to get anything of a game if you turn it on to have something in the background. Movies are nice because you can passively participate. So this is the biggest difference between the two. In movies, you can passively participate. In music, you have to be active in that. Sagar Giri is the only one who is saying अभी तक कि games are better. तो जैसे मैं आपको एक गेम का मैं आपको एम्बियंस सुनाता हूँ. एम्बियंस आई डोंट. मैं आपके साथ मेरी स्क्रीन वापस शेयर करता हूँ गाइस. 1 सेकेंड. मैंने कंप्यूटर ऑडियो ऑन नहीं किया था. अब मैं आपको दिखाता हूँ. सो ये एक हाफ लाइफ में एक सिटी होती है जिसका नाम होता है सिटी 17. ये उसका एम्बियंस है. दिस इज जस्ट द साउंड ट्रैक. लेकिन मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ कि किस लेवल पे ये लोग मचा रहे हैं. ये प्रॉपर ना एएसएमआर वीडियो के जैसे है. Static invasion in progress in this community. Respawn. Isolate. Inquire. मैंने ये रिसेंटली अभी इतना ज़्यादा सुना है. स्पेशली दिस साउंड ट्रैक सिटी 17 एम्बियंस. इट्स मदरफकिंग गुड. एंड लाइक ऐसे बहुत सारे एम्बियंस है. मतलब आधा तो मेरे को ये एटमॉस्फेयर की वजह से पसंद है गेम. जैसे मैं आज भी सुबह ये वाला ट्रैक सुन रहा था. और कमेंट्स पढ़ते हैं और कमेंट्स देखते हैं क्या है.
So विनय ने कुछ कहा था, मैं बोलने वाला था बट लाइक ही डिलीटेड द कमेंट. बट जो आप शायद बैटमैन के लिए कह रहे थे, आई कैन से द सेम फॉर हिटमैन. Hitman game is so much better than the movies because when they tried to make a movie out of Hitman, it did not work. And Hitman games मेरे को लगता है बिल्कुल टॉप नॉच स्टफ है, लाइक उसको कोई अभी तक बीट नहीं कर पाया. So in my opinion, each medium has different ways of telling stories and they can't be objectively compared. As in better medium discussion, each person will respond to each medium differently, as it's in no way an indication that this medium is better than that. So किसी ने लिखा है video games. In my mind, there is no argument. Movies are in 3 dimension, words, picture and time. Video games are in 4 dimension. ये बहुत से comment है. Words, picture, time and choice. This means that while movies can only tell one set of story that will always be the same every time you watch it, video games can tell entirely different stories every time you play it. I'm not saying that video games have reached their full potential yet. In fact, I think that people treat them too much like movies. Telltale Games has tried to move into different choices, different end market, but they have failed on every possible level. One second. Making their games more like a visual novel that always leads to the same end. But there's no gameplay. My dream is that somebody one day makes a game that has large amount of endings instead of just one good or one bad. Video games could be absolutely incredible at telling stories that end up morally in morally gray areas. Nobody has ever managed it though. So I am copying this and I'm posting it in my Notion notes. मैं यहाँ पे notes बना रहा था हम क्या-क्या बात करने वाले हैं. I really like this point. Video games. So I'm just like highlighting this. क्योंकि जैसे इसने कहा कि यहाँ पे चॉइस वाला जो फैक्टर होता है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. और देखते हैं. आई एग्री एंड डिसएग्री. साइलेंट हिल 2 इज अ ग्रेट गेम. म्यूजिक थोड़ा सा और स्लो कर देते हैं. Silent Hill 2 is a great game, but the fact that there are multiple endings which all have different implications that you acquire through just small actions in game you may not realize you are doing. These endings do completely change the message of the game. Two of the endings are about trying to redo past events, even though you will repeat the same mistakes. One ending is about forgiving yourself for the wrongs you have done. And the last one is about not forgiving yourself and becoming victim to the horrible things you've done. ठीक है, ये थोड़ा लंबा comment है, but like we get the idea. Let's search more video games or movies. ये लेकिन games वाले subreddit में तो I'm sure people will say games here. So Sagar Giri is saying Spider-Man, both movies and game. Hitesh is saying, but for Batman, comics is better than Batman movies. Sagar Giri is saying Detroit Become Human 100 plus ending. I don't think I can choose one. Both have their own advantages and limitations. I do think video games offer better bang for your buck than movies in terms of entertainment to dollar spent. ये काफी सही चीज है guys, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊं. So I had bought Half-Life 2 for $350 on Steam. Steam पे आपको Mac के लिए भी मिल जाएगा और मैंने अभी ₹500 में और भी बहुत सारे गेम खरीदे. ₹350 में मैं जाके PVR में एक पिक्चर देख सकता हूँ, बट वो 3 घंटे का एक्सपीरियंस है. Whereas Half-Life मेरे पास सेव्ड रहेगा मेरे क्लाउड पे, एंड लाइक एनी गेम लाइक Half-Life फॉर दैट लाइक आर्ग्यूमेंट, और आप उसको कभी भी खेल सकते हो, राइट? और ज़्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है. यू कैन ऑल्सो मेक अ चॉइस, एंड आई डू थिंक मूवीज आर ऑन द डिक्लाइन एंड विल कंटिन्यू टू डिक्लाइन. ये तो हो ही रहा है. आई डू अग्री ये हो रहा है. वी मस्ट अग्री दे आर डिफरेंट मीडियम्स. What do you think is better, clean nuclear energy or sex with a beautiful woman?
All right, that's a pretty big slice of hyperbole. I'll try to break it down. In my opinion, gaming is very effective form of entertainment in terms of engaging the audience. For example, I play Chivalry, Medieval Warfare. It is exhilarating to be able to cross the battlefield, screaming and proceed to engage in visceral duel with another knight. With most video games, I think you are engaging in a personal experience. A lot of games tend to revolve around you, your decisions, and how you want to interact with the world. In comparison, I think movies are generally a better medium for conveying a message or telling history, whereas games are usually centered around entertaining and catering to the player. Movies are a lot more oriented towards presenting someone else's ideas. Abhinav Vatak Batman movies are better. Let me be sad is saying, आपका username मस्त है bro. I don't think any medium is better than the other. Anime, movie, manga, games, books. If we take a single story and all of its versions, it may be better in one format, and it doesn't mean uh, that the medium is better. No, but I think it means, like, I would like to disagree here because आपको मैं गेम न्यूएल का ना एक वो दिखाता हूँ, रुको. Gabe Newell interview. So Gabe Newell is the founder of Valve, and हम इनका एक इंटरव्यू देखते हैं. अभी अभी आया था, ये रिसेंटली आया था 3 महीने पहले, क्योंकि अभी इनका लेटेस्ट गेम वो आया था अभी, which is Half-Life Alyx. Game dev, he remembers. Okay, this is not the video. 1 second, let me show you Gabe Newell interview. Is he there? Gabe is. Ryan McCaffrey with IGN. We are at Valve Software talking Half-Life Alyx. I've got Gabe Newell, the co-founder of Valve, along with Robin Walker, programmer, designer on Alyx. Gabe, what's your reaction when the team comes to you and says, we're working on a new Half-Life game? Quality It's to sort be of like, reduced karta. The line in John Wick where everybody keeps asking me if I'm back, and it's like, yeah, I guess Half-Life's back. So it's great. It's a huge amount of fun. It's great to work in Half-Life universe again, and it's, for us it symbolizes, that we've identified a set of fundamentally interesting challenges in game design, and there's an opportunity. Yes, Sagar is right. Steam भी Valve का ही है. So ये मेरे को अभी recently पता चला था. Were you surprised at all that it was a VR project? No. Well, once people play the game, I think they'll understand why we think that all of the things that have traditionally been associated with Half-Life in terms of this single-player immersive experience is why VR gives us a huge opportunity to improve that. So the proof is really going to be when people play the game. I think they'll say, oh, okay, this makes a lot of sense. Because for us, this is really a statement about everything we've learned, everything that we were trying to do to move. मैं और quality कम करके देखता हूँ, better होता है क्या? And VR enables that in ways that I think will be obvious to people when they play. Yeah. Robin, were you nervous at all letting him know the first time that the project had kicked up? I wasn't nervous about Gabe at all. I was nervous about our fans. Yeah. I think announcing the next Half-Life game was obviously something we worried about a bunch. And I think we just kept telling ourselves, as long as it's good, everyone will be happy. And hopefully that worked out. So I've worked on all of, from the beginning. From day one, yeah. Right? And, but for people who are new to the Alyx team, they're kind of terrified because they have to live up to all of these expectations. Sure. Some of them got into the industry because they played, one of the Half-Life games. So they're pretty stressed out. I'm super happy. I couldn't be more excited. Yeah, one of the reasons why I also wanted to have this discussion is because अभी कुछ time पहले Half-Life Alyx release हुआ है, और अगर आप Half-Life Alyx देखोगे, so it's a VR game. और VR जब से आया ना, तो वो ये कि इसमें ना मैं आपको इंटरव्यू इसलिए दिखा रहा हूँ because at one point Gabe says कि आने वाले गेम्स में you will be able to smell also. देखो अभी भी अगर आप बात करो ना, the senses की अगर हम बात करें, हमारा sense of touch,
हमारा सेंस ऑफ लाइक स्मेल एंड हमारा सेंस ऑफ हमारे मतलब सारे सेंसेस यूज नहीं हो रहे, तो जब हमारा सेंस ऑफ स्मेल भी यूज होने लग जाएगा गेम में, एंड आई थिंक वैल्व इज ऑलरेडी वर्किंग टुवर्ड्स दैट. तो ये अभी इनका अनाउंसमेंट ट्रेलर आया था लेटेस्ट, लेट्स वॉच दिस. I'm here. So what's the plan? If we can get this weapon, what we're doing here could change things forever. There's no straight shot to the vault. I'm gonna head inside, find a way out. Got it. I'm with you every step of the way. You're gonna need a gun. Don't worry, it's unloaded. It's unloaded now. Combine chatter's really picking up. They know you're coming. You need to get out of here, now. Oh, God. They've got Dad. They're gonna find out what he knows, and then they're gonna kill him. All this is my fault. I never told you. I couldn't. I'm so sorry, baby. You will not save him. Alex Vance alone cannot prevent his fate. Close your eyes, honey. ये गेम है मतलब जो अभी VR पे आया, इट गॉट रियली गुड रिव्यूज. तो मेरे को वही लग रहा था कि लाइक, और मैंने आज ही हाफ लाइफ 2 एपिसोड 2 खत्म किया है. दैट इज व्हाई आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट. सो हाफ लाइफ एलेक्स और हाफ लाइफ को लाइक वन ऑफ द बेस्ट गेम्स कंसिडर किया जाता है, क्योंकि मैंने भी अभी इतने टाइम बाद खेला, तो जो इसका एटमॉस्फेयर था, लाइक आई एम जस्ट नॉट एबल टू गेट इट आउट ऑफ माई माइंड. और हाफ लाइफ एलेक्स के अनाउंसमेंट ट्रेलर पे भी यू विल सी लाइक सच फनी कमेंट्स, क्योंकि they made us wait for like 13 years for this game. I still can't believe I'm watching a non-fan made Half-Life trailer, because people are totally given up hope for that कि मतलब कि कभी आएगा Half-Life. An actual moment of silence for everyone who did not live to see this day. And it's like one of the biggest moments in the gaming world, ki like when they made the Half-Life Alex announcement trailer. Now the game has released. अभी मैं PewDiePie के भी आज videos देख रहा था where he has played this game, and it is making me re-question everything. This game is making me re-question all my fundamental beliefs about gaming, क्योंकि मेरे को ये खेलने के बाद ऐसा लगा कि fuck यार, मतलब ये कुछ चीजें तो जैसे बैंडरस्नैच ने करने की कोशिश की. बैंडरस्नैच लाइक ट्राइड टू लाइक कवर अप दैट थिंग व्हिच दैट गाय टॉक्ड अबाउट कि हमें चॉइस नहीं मिलती व्हेन वी वॉच अ मूवी, बट इट स्टिल डिड नॉट वर्क एज मच एज वी थॉट इट वुड. बैंडरस्नैच के बारे में आपने देखा होगा 2 हफ्ते बहुत ज्यादा बात हुई थी, एंड देन पीपल डिड नॉट टॉक अबाउट बैंडरस्नैच एट ऑल. बैंडरस्नैच सही था, लाइक द आइडिया वाज गुड कि आप चॉइस ले रहे हो वगैरह, मेरे को भी मजा आया था. 1 हफ्ते तक बात हुई, सब भूल गए. Whereas when you talk about games like Half-Life, and I am especially talking about that क्योंकि मैंने वो कल ही खत्म किया है, उसका एपिसोड 2, Half-Life एपिसोड 2, जो Half-Life 2 का भी एपिसोड 2 है, वो खेलने के बाद मेरे को समझ में आया कि मे बी because of like the ability to have choices, the ability to have like being in the environment, it creates all the difference. And especially when VR is coming, VR is going to change things altogether even more, क्योंकि VR में तो पूरा एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस है ना. आप लाइक गेम के अंदर ही हो, आप लाइक अपने हाथ यूज कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, लाइक थोड़ा सा आप आगे चल रहे हो, यू आर बेंडिंग अकॉर्डिंगली. तो सेंसेस आपका लाइक सेंसरी तरीके से आप ज्यादा और इन्वॉल्व हो गेम में. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि जब गेब न्यूएल बोलता है ना, उसको मतलब ही इज लाइक द जीसस क्राइस्ट ऑफ लाइक द गेमिंग वर्ल्ड. सो व्हेन ही सेज in the games in future you will also be able to smell. तो मैं कह रहा हूँ कि
आर्ग्यूमेंट ही खत्म हो जाती है ना, क्योंकि दे आर गेटिंग द बेस्ट स्टोरी टेलर्स फ्रॉम द मूवी वर्ल्ड. अभी आपको पता है लास्ट ऑफ अस, एनीवन वांट्स टू गेस हु गेव द म्यूजिक ऑफ लास्ट ऑफ अस पार्ट 2? क्योंकि वो लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 का जिसने म्यूजिक दिया है, he gives the music of all the movies mostly जिनका हमने नाम सुना. लास्ट ऑफ अस, एक सेकेंड, ऑफ अस पार्ट 2 साउंड ट्रैक. सो लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 का जो साउंड ट्रैक है वो गुस्तावो सांतालाला का है. और गुस्तावो सांतालाला ने इतनी बड़ी बड़ी फिल्म्स का म्यूजिक दिया. He has given the music of Babel. उन्होंने धोबी घाट का भी म्यूजिक दिया था. Now I haven't played this game yet, but I'm just saying कि आप यही मान लो ना कि अगर हम इस यूनिवर्स से, like if we get the best people from the, यही तो होता था ना पहले कि मान लो कोई बुक लिखता था तो बुक वाले को आप ले आए स्क्रीन राइटिंग में कि चल तू अब बेटर मीडियम में, अब तूने बुक लिखी, अब तू हमें यहाँ पे कुछ लिखने में हेल्प कर हमें. तो मान लो अब आप इन राइटर्स को गेम्स में ले गए. क्योंकि मेरा आधा दिमाग कल रात से इसलिए खराब हो रखा है क्योंकि मैंने हाफ लाइफ 2 की स्टोरी देखी and I read about it, I researched about it. It is so deep. और इनका अभी लेटेस्ट गेम 13 साल बाद आया. तो ओवर अ स्पैन ऑफ 20 years how they continued the story, कितना धीरे धीरे बढ़ रही है, but like there is so much depth in the story and उसके बाद like it makes you re-question everything you think. कि मतलब मेरे को तो ये लगता था कि it's just movies and the end, but I have been thinking now, especially since VR came. and ये आपने आनंद गांधी के बारे में भी देखा होगा. आनंद गांधी ने अपनी एक VR की कंपनी कुछ टाइम पहले चालू की थी because he also realized VR is the next big thing. और VR को अभी तक कोई इतना प्रॉपरली क्रैक नहीं कर पाया था. तो Valve का बेसिकली यही होता है. What Valve does is Valve कुछ टाइम में आते हैं, like they come every now and then, और वो रेवोल्यूशनलाइज कर देते सब कुछ. मतलब उनको पता था हाफ लाइफ 2 उन्होंने इतना शानदार गेम बना दिया है, बट दे वांटेड टू टेक इट नेक्स्ट स्टेप ना. तो वो नेक्स्ट स्टेप लेके जाने के लिए अब उन्होंने VR को टच किया. और VR को अभी तक कोई क्रैक नहीं कर पाया था, बट दे आर सेइंग हाफ लाइफ एलेक्स इज सो गुड. This is the game. It released, I think, अभी 23rd March को release हुआ है, and it has like a 10 on 10 rating everywhere. Akshat Gupta is absolutely right when he's saying gaming industry is also bigger in terms of commercial games like as compared to movies. ये भी चीज मेरे को नहीं पता थी. ये भी चीज मेरे को अभी बहुत रिसेंटली पता चली है. एंड सो वही है कि आप ये मानो ना कल को अगर वो एक नोलन को गेम डायरेक्ट करने के लिए बुलाएं, then technically gaming is better, right? Like let's say you are immersed in a game made by Christopher Nolan, और आप क्रिस्टोफर नोलन ने जो एक गेम बनाया है आप उस गेम को खेल रहे हो, और तो फिर तो मेरे को लगता है कि क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है ना. इट्स जस्ट अबाउट कि वी आर वेरी इमोशनल अबाउट मूवीज राइट नाउ. हमारा एक इमोशनल एलिमेंट अटैच्ड है कि नहीं वहाँ पे नोलन मूवीज बनाता है, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी बनाता है. श्योर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी तो मना भी कर सकता है, वो बोल देगा कि गेम्स आर नॉट सिनेमा, बट आई एम जस्ट सेइंग कि पीपल हु अडैप्ट, जैसे हम टीवी शोज पे हैं, टीवी शोज टेक्निकली आज की डेट में एक बेटर फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग है मूवीज से, क्योंकि आप एक ही कैरेक्टर को लेके लाइक ओवर द इयर्स आप स्टोरी बना सकते हो, आप कैरेक्टर्स पे काम कर सकते हो. मेरे को ऐसा लगता है वीडियो गेम्स टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल ऑल टुगेदर. कोविड के केसेस आ रहे हैं यार, मत दिखाओ, डर लगता है पूरे टाइम. ब्लॉक नहीं देखने भाई कोविड के केसेस मेरे को. हाँ, सो दिस इज लाइक मेकिंग मी रिक्वेश्चन एवरीथिंग अबाउट लाइफ इन जनरल. लाइक और मैं पहले ना बहुत वीडियो गेम्स खेलता भी था, तो अक्षत जैसे कह रहा है नोलन का गेम हो शिट, लाइक वो ये you get Alejandro Inarritu to make a game. मैं वही सोच रहा हूँ, वो आर द, आप कौन से डायरेक्टर्स और राइटर्स के गेम्स देखने जाओगे? अभिनव पाठक is saying I don't think great directors can direct great games. It's different field.
I would strongly disagree, man. उनको story बनानी है, उनको frames decide करनी है. Great directors also make great Instagram stories. ना sure बाकी लोग भी कर सकते हैं, but अगर तुम उनको एक नया medium ला दोगे कि आपको एक Instagram story में पूरी कहानी बतानी है, they can do it because it's a medium for them. ठीक है, vertical format अब ये करना है. Great directors can do it. Film directors सर्च करते हैं and video game directors. Let's see if we find something on this. 11 famous directors who have directed video game trailers. Nice. This is something very interesting. Fuck. David Lynch ने कुछ डायरेक्ट किया. पॉइंट्स में नहीं है क्या? ओके, रेजिडेंट इविल का किया है जॉर्ज ए रोमेरो ने. ओके. जेम्स वॉन ने किया डेड स्पेस का. ओके. जॉन मैकटेरन, मैंने तो एक भी नाम नहीं सुना यार. ये जोसेफ कॉनेस्की, हैलो 3 Gears of War. और क्योंकि मैंने एक बार बहुत पहले एक स्ट्रीम किया था, एक स्ट्रीम किया था जिसमें आई टॉक्ड अबाउट स्पाइडरमैन. और क्योंकि मेरे को लगता है स्पाइडरमैन इन एनी वे स्पाइडरमैन हिटमैन. डेविड लिंच PS2 कमर्शियल. अरे ये देखते हैं. लेट्स सर्च फॉर दिस. डेविड लिंच PS2 कमर्शियल. डेविड लिंच ने PS2 कमर्शियल बनाया. लेट्स वॉच दिस. 40 सेकंड का. This is nice. Like they wrote different plays, different rules. I think this is the key. क्योंकि आप इसमें This is such a great line जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसके बारे में. लाइक कि इतनी सही लाइन है कि डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट रूल्स. लेट्स सी और किस डायरेक्टर ने क्या बनाया. माइकल बे ने नीड फॉर स्पीड द रन का ट्रेलर बनाया. फक. हाँ थोड़ी देर में ना. हाँ, नीड फॉर स्पीड, माइकल बे, नीड फॉर स्पीड. So this is a trailer directed by Michael Bay. You're a marked man, Jack. Get him! Get him! You owe a lot of money to some bad people. It just so happens I have a solution to your little problem. A race. 3,000 miles from San Francisco to New York. 200 of the best drivers in the world. Winner gets $25 million. And if I lose? Then you're dead. सही है ये. मतलब मेरे को तो बेसिक सही लगा ये. इसमें तो कुछ नहीं था. रूपर्ट सैंडर्स. अभी तक मैंने नाम तो 2 ही सुने हैं. ब्रेट ट्रैटना, ये भी मेरे को नहीं पता कौन है. टिम मिलर ही सुना सा लग रहा है. एली रॉथ, डार्क सोल्स 3.
ठीक है. और एक बहुत से कोरा पे क्वेश्चन है. I'm so sorry, हम कोरा पे पहुंच गए. Like let's see कोरा पे लोगों ने क्या लिखा है. Can I be a movie director and a film director at the same time? Video game designer ने आंसर किया. You can't both direct a movie and a video game at the same time. Each project would require your full attention. Let me zoom this. Especially during the production phase, when I have directed video games, it would not be unusual for me to spend 10 to 18 hours a day focused on this. But I suppose that at different points in career, you can direct both movies and video games. Movie director jobs are typically work for hire gigs, where directors may have stretches of time between projects to do other things. However, video game director jobs are typically salaried gigs, except for many indie games. Although layoffs are common in the gaming industry, and so game directors may also have stretches of time in between projects. Yet one difficulty is that to do each job well, it takes certain degree of expertise in technology and methodology of each industry. Another difficulty in films and games are different mediums require different creative sensibilities. I've worked with screenplay writers before who just didn't get the interactive nature of video games, where I'm sure there are many things that I can't just get about film narrative. I know only one case where a film director, Chris Robert, directed a feature film and the result was Wing Commander, which received a 10% rating on Rotten Tomatoes. Holy shit. Film writers who wrote video game stories. Top 20 game writers. From writer to video game writer. Let's search these things, man. This is very interesting. Comments पढ़ते हैं. Steven Spielberg, Ready Player One. Yeah. Aman Verma, imagine Tarantino directing a video game. Inside the Cosmolution, did you play The Last of Us 2? यार अभी तक नहीं खेला है मैंने. Anup Deshmukh, Inarritu and Cuarón or Coppola or Lynch directed game would be amazing to see. David Lynch का बहुत खतरनाक होगा game. Fincher के game में तो मजा आ जाएगा. Directors can surely make a mark in the gaming space too. Shilpak Toy Singh would be exciting. 16 Janme Bhave Singh, explosions in trailer considering it was Michael Bay. काफी सही. सलमान खान का कैमियो है PS2 कमर्शियल में, अभिनव पाठक. कुछ भी, ये सही बोल रहे हो. माइकल वे जस्ट लिए. क्रिस एवलॉन. Notable projects: Torment, Fallout 2, Knights of Old Republic, Sith. इस आर्टिकल से रिलेटेड और चीजें ढूंढते हैं. फिल्म बैंडरस्नैच का राइटर कौन है? चार्ली ब्रूकर ही है क्या? अरे फक. It was and it is an interactive film. Let's search for best interactive films. टॉप पे तो बैंडरस्नैच ही है. Take this lollipop. Take this lollipop interactive. Let's see what this is. Take this lollipop.
क्या हो रहा है मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा. क्या है क्या मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया. कमेंट्स पढ़ते. So sad he looked at my account, saw that I had no friends, started to cry and gave up. I never knew my uncle had a computer. They should go. Let me be sad is Mosaic was an interactive HBO series directed by Steven Soderbergh. From screenwriters to video game writers, how can you take the leap? Gamers are demanding more engaging storylines alongside gameplay environment, and TV and film script writers are increasingly looking at games as new medium to tell their stories. Interesting है यार guys ये सब. बट हाँ हाफ लाइफ वॉज द मेन रीजन वाई लाइक जिससे मेरे को काफी कुछ क्लियर हो गया कि देखो गेम्स आर हेयर टू स्टे एंड VR आ जाएगा तो VR बेसिकली लाइंस और ब्लर कर देगा गेम्स और मूवीज के बीच में. ये लाइन तो मतलब आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बिकॉज हाफ लाइफ एलेक्स वैल्व ने बनाया तो वैल्व जब भी कुछ बनाता है लाइक दे टेक थिंग्स टू अनदर लेवल. सो सब धीरे धीरे वो जो रखते जाएंगे व्हाट इज नेक्स्ट हम फिर अलग उस पर चले जाएंगे. So Sagar Giri is saying you have to solve murder case by looking at screen and Facebook of your girlfriend. Okay, yeah, I think वो उनका plot बता रहा है मेरे को. तो यही था यार मोटा मोटा मेरे को जो डिस्कस करना था. इसका आंसर नहीं पता बट लाइक आई एम सेइंग वीडियो गेम्स अगर आज भी अगर आपको लगता है बेटर नहीं है तो बट हाफ लाइफ एलेक्स आ गया विच इज लाइक द बेस्ट VR गेम आउट देयर. धीरे धीरे हम लोग भी खेलेंगे व्हेन वील हैव एक्सेस टू VR एंड देन वील रियलाइज कि people are not like the gaming people are not like just like fucking around, like they're taking things to another level. और मैंने कल ही एक्सपीरियंस किया ये चीज़ें हाफ लाइफ का. मेरे को अब समझ आया 15 साल पहले लोग पागल के होते थे. बहुत लोगों को ये पता नहीं है बट हाफ लाइफ के ना 3 ऐसे पार्ट्स हैं जो हाफ लाइफ 2 के बाद भी आए थे. सॉरी 2 पार्ट्स हैं. वन इज हाफ लाइफ 2 एपिसोड 1 एंड वन इज हाफ लाइफ 2 एपिसोड 2. उनके नाम इतने कंफ्यूजिंग है कि पीपल डोंट रियलाइज इट. बट इफ यू हैव प्लेड हाफ लाइफ 2 उसके आगे 2 और पार्ट्स हैं. तो अगर आप स्टीम पे ये गेम खरीदोगे तो आपको वो दोनों पार्ट्स मिलेंगे एंड लाइक आई प्लेड दैट. सो आप खेलना हाफ लाइफ तो एलेक्स हाफ लाइफ 2 तो आप लोगों ने खेला ही होगा. मैं थोड़ा पीछे चल रहा हूँ गेमिंग के मामले में बट ये आई एम जस्ट सेइंग कि ये लाइंस ब्लर्ड हो जाएंगे बिटवीन गेम्स एंड फिल्म्स. पैसिव से ये चीज़ें कम पैसिव हो जाएंगी. हम बैठे बैठे डिसीजंस ले पाएंगे क्या करना है. इंटरेक्टिव फिल्म्स आ गई बट आई एम जस्ट सेइंग कि अभी भी इंटरेक्टिव फिल्म्स में हमें शायद इतना मजा नहीं आता बिकॉज इट इज लाइक 2D राइट. जब आप VR में आ जाओगे देन लाइक आई थिंक लाइंस पूरी तरीके से एक हो जाएंगे. लाइक सब कुछ एक पेरेंट का पार्ट बन जाएंगे. द पेरेंट भी VR एंड लाइक गेम्स मूवीज सब एक जैसी चीजें लगेंगी. आप मतलब वहाँ मेरे को लगता है कि and then you will maybe enjoy games also even more than films. जो अगर मान लो नोलन ने गेम बनाया है VR में, नोलन ने एक मूवी बनाई है VR में. अगर आप इंसेप्शन में आपको गेम में डाल दिया इंसेप्शन के अ गेम डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नोलन, आई एम 100% श्योर दिस इज हाउ यू वुड वांट टू एक्सपीरियंस इंसेप्शन. ना मान लो कि टेनेट रिलीज ही ना हो पाए, कोविड का इतना कहर रहा है, अगले 5 साल तक टेनेट रिलीज ही ना हो पाए एंड लोग कह रहे हैं ना एक जोक चल रहा है कि नोलन शुड डायरेक्टली लाइक पुट इट इन आवर सबकॉन्शियस और वैसे कर देना चाहिए. एंड मैं वही कह रहा हूँ कि मान लो कि अगर वो डायरेक्ट VR के थ्रू वो डाल देगी लाइक टेनेट इज नाउ जस्ट अ VR एक्सपीरियंस बिकॉज उसके वैसे भी इतने डीप एक्सपीरियंसेस होते हैं. दीज थिंग्स विल चेंज जो एवेटार के थ्रू जेम्स कैमरन कर रहे हैं एंड पीपल हु आर लाइक टेकिंग द बिगेस्ट लीप्स हियर
मेरे को लगता है कि lines will get like more blurry and blurry. Chinmay Bhavesh Singh, I think Anand Gandhi is working in VR films. मैंने कहा था like I think you joined late. Abhinav Pathak is saying video games are better because they're interactive. Sagar Giri is saying gaming industry is way ahead in research. He has a lab in Warsaw. And let me be sad. Thank you for telling me about this series. That let's quickly see it. मैं फिर जाऊँगा. ज़्यादा कुछ नहीं देख पाएंगे. Mosaic. HBO. I did not know it was interactive. मैंने सुना तो इसके बारे में. Fuck. क्या पोस्टर है भाई. Nothing makes me more interested in something than a good poster. This is such a great fucking poster. Let's just appreciate the poster, guys. A 5-night limited series. Her story begins where her life ends. This is so good. Thank you, Let Me Be Sad, for telling me about this. That was a rule देखूंगा. ठीक है, ये देखेंगे अपन. चलो गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. आज का स्ट्रीम हो गया. आज मेरे को जल्दी करके देखना था क्योंकि मैं आजकल बहुत लेट सो रहा हूँ, बट आई थिंक रात के बेटर रहेंगे. बट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. दिस वाज अ लॉट ऑफ फन. ये चैनल सब्सक्राइब करके रखो. रोज का एक स्ट्रीम कर रहा हूँ. रोज की एक नई चीज डिस्कस कर रहे हैं. थिंग्स विच आर नॉट नेसेसरीली रिलेटेड टू मूवीज, और जो मैं चलचित्र पे डायरेक्टली नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वहाँ सिर्फ फिल्म रिकमेंडेशन होती है. बट ऑल द न्यू थिंग्स दैट आई एम ट्राइंग टू डू एंड डिस्कवर, क्योंकि मैं जो रिकमेंड करता हूँ उससे पहले एक पार्ट आता है डिस्कवरी का. सो इन लाइव स्ट्रीम्स आई कैन डिस्कवर विद यू. सो इफ यू विल सब्सक्राइब टू दिस चैनल वी कैन डिस्कवर टुगेदर. ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. बाय.